Hey guys, welcome back to my another video. So in this video, we are going to explore this node mailer. This is the npm package which is used to send mail from our Node.js server. So let's start. So let's see the use cases of the node mailer. So first is the user registration. So user registration, how will you use? So let me give you a scenario. So suppose you have a website or a app where user sign in or log in into your site or app. So you can send him or her a greetings like welcome to our site or app, something like that. After that, we have the password reset. Suppose user of your site or the app forget their password or something like that. You can use this node mailer. I will show you how to use the node mailer to create this type of the reset links or the OTP, how to generate OTP, something like that. Then the next one is the notification. So suppose you have a blog application or the website. Whenever you write a blog or something like that, you can notify your user. Then the newsletter campaigns similar use as the notifications. So you can request user to give feedback on your website or the app, how you are working or what are you doing wrong or right. Okay. Then next is the marketing campaigns. Then the customer supports. I will show you all how to use it. Then in event invitation, you can invite them in your webinars or seminars, something like that. And the transactional emails. So let's see the what are the alternatives of the node mailer. So first is the SendGrid, then Amazon SES, after that SMTP.js, okay, then Mailgun, and after that Email.js. All are good and best in their own category. And let's move to next section. So why to choose node mailer? Although we have a wonderful choice other than the node mailer, but why to choose node mailer? Let's see. So first of all, it is easy to implement in your Node.js servers. You do not need much deeper knowledge of this node mailer package. I will show you in this video. So then the single module with the zero dependency, you do not need to install any other package to support this node mailer. You just need to install this node mailer package. Then the platform independency, it will work. Node will work in the every platform where this Node.js work. That means you can work this node mailer package will work in the Windows, Linux as well as in the Mac OS. So you can send the HTML content and the files as written. You can sell HTML content and the files just like the bigger companies send their newsletters in the wonderful HTML content in the template. I will show you how to send it. Okay. And also how to send files, multiple files at the same time. You can install it from the npm in the terminal. Okay. This support Unicode. Unicode means support Unicode. That means it support the every character. That is, if you send the some emails in the English, to the another one can translate it in the other language. Okay. And the most important thing, it is free to use. So let's learn by doing these things. Let's move to the next module. Hey guys, welcome back to my another video. So in this video, we are going to write the codes of the node mailer. So in the last video, we have covered the basic things. Okay. By the end of this series, you will able to create this type of templates like Spotify. And yeah,
Let's continue to writing codes. So go to your folder, type cmd. Oh, sorry, I have written cdm. cmd. Create a folder node mailer for me. You can write your own folder name. Mailer, enter. Go to node mailer. Hit enter. Then initialize your node server. Write npm init. Okay, hit enter. Okay, name is node mailer version. Okay, this one is nothing. Okay, if you want this code, then write in the comment box. I will provide you. Okay, keyword is nothing. Author, of course. This is Lordic boss. Then hit enter. Then we need some packages like Express, npm i Express. Then node mailer, of course. And one last is .env. Okay, I hope you know each one except node mailer. Okay, so let's go open our VS code. So first we have to create a file. Sorry, index.js, and let's create another file, mail.js. Okay, leave it right now. We will try here. I mean, we will do here not mailer things. Okay, so let's create a server. Const app equal to require. Okay, we have to write the first. Okay, I think it will work. Let's try. Const app equal to require express. Okay, this will work because we are initializing here. Okay, calling the express function here. Then we do not need http right now. Let's listen our server port 3000. Just create a env file here. .env. I recommend you to do with me. Okay, so in this way you will learn and you do not face any problem. But after writing with me, just delete that folder and try again yourself. Okay, then write const port, sorry, port equal to process. Okay, we are getting process one. And we have to also write this line, require .env.config. Okay, just so go to the terminal. So it's taking a little bit time. So right here node mon. So I have a global package node mon which is used to keep running your server. Okay, index it localhost 3000. So cannot get. Okay, because we haven't written any what do you say in points. Okay, so send res.hello, then reload it. So we are getting hello world. Okay, that's great. Now we have to get the node mailer. So first we have to create our transporter. So transporter node mailer dot create transporter. Okay, then service we are going to use Gmail right now, and the author and the so I will show how will you get this email and the password. Okay, so you have to go to your Google account here. Click on your profile, then go to your manage your Google account. Click here. Then you first have to check your, sorry, go to your security. I have clicked here. Okay, go to your security and make sure your two step verification is on. Okay, then search here app password. Okay, app password, we are getting a app password here. Click here. So it will ask for your password. Enter here.
So you can write here your app name, and it will show you 16 digit your password. Here you have to paste this, or you can use here in the env file. You just write that. Let me show you. So we are using port equal to, no, we let's write 3000. Then we have to write email and password. Okay, so I will write here. So first we have to check is this port is taking okay, we haven't written here port name. Okay, port. So let's check is our env file is working or not. So go to the this localhost and reload here. So it is still working. That means it's this line getting board from the our env file. So go to your env file once and change the port number. So let's write 9000 and go here and reload now. So that is still working. So that means it is not taking from our env file. App is listening in the 3000. Okay, okay, this is not any important things. So okay, if you change something in the env file, you have to close your running terminal off and then restart it, because it directly do not change anything in your file if you change in the env file. Okay, so right now you can see that we are not getting anything in the 3000 port, but if I change the port number 3000 to 9000, we will get hello world. Okay, so that's great. So I have to input here my email and the password. Okay, so I have written my user and the password, basically email and the password in the env file. So we have to write different other things also, like host. We are going to use smtp.gmail.com. Then secure is false. Then we have to use port. You can write any port because we are using the secure false. Okay, let's write 587, something like that. Okay, then come here in this line, mail options from, we are getting process.env from, basically we are getting the email from our env file. Then to whom you want to send, I will send to myself, so I will change my email here later. Okay, then you have to write here. Okay, note. Okay, transporter. Okay, transporter dot send mail, the mail option, and the error or the info. Okay, so if we successfully send the mail, it will console this line email send and the response id. Okay, else it will show you the error. So let's check once. We have to change our, okay, let me write here something different thing here. Hmm, let's write here to email underscore email. So we are in the our gmail. Let's reload it once. As you see, we do not have any email right now. Just go to here in the this one localhost, reload it once. So as you see, the mail is successfully sent. So just see, we are getting the mail from the okay, this email id Fundamentals 820. Okay, that what ag. So you can see this code. Let me show you whole code once. So basically this line is used to get the information for this env file. Basically this reload our gs file to get our information from env file. Okay, this is node mailer. We are getting node mailer from the npm package, and this is express. We are creating the app here. So you can simplify this line by writing const express equal to require, okay, express, and you can remove here this.
and you can directly write express. Okay, so both line are the same. Then here we are creating our transporter object, node create transporter, and we are putting the service, what service we are using. So currently we are using the Gmail. After that we are using the host SMTP Gmail server. If you want to know more about SMTP, I will attach a link in the description, or you can read from there. Okay, so we are using the secure false. You can turn on secure true, but you have to use the different port. Okay, uh, then auth, here we are passing the our email and the password. As I showed you previously, how do you generate how can you generate your password from Gmail or Google account. Okay, then here we are putting our mail option. So this is our the basic mail, where we are basically sending the subject and the text. But in the later video, I will show you how to you can send the HTML and the HTMLs and the other and the different templates. Okay, HTML templates. And here we are sending the mails. Basically, transporter to send mail. This is a function where it's taking the parameter as the mail options, and it's returning the, basically this is returning the, basically here from here, this is a callback function which taking the parameter as either and the information. Okay, if it sends the email successfully, this will console this line else part. Okay, else if it's face any error, it will console this line. Okay, so I hope you have enjoyed this video and learned different things. I mean, you have started the learning the node mailer. So if you have learned something new, please subscribe my channel and like this video. This will help me and motivate me. Okay, thank you. Hey everyone, welcome back to the third module of this node mailer series. So in the last video, we have written let me open. We have written a simple code, basic code of the node mailer, where we are sending the mail in this endpoint slash endpoint. And what's the problem here? Basically, we can send the mail on the loading, and we cannot control this node mailer. That means we cannot send mail to the another person. We are static. We are using the static sender. Okay, receiver and the sender, both things. Basically, this code is not organized in a good manner. So in this video, we are going to write the code in a good manner so that we can use that code in the uh, for the multi-purpose. Okay. So first we have to create a mail JS where we will write our node mailer code. Okay. Mail JS. So first we have to import that. Okay, that's cool. Then we have to create our transporter. So just go to your index. I will recommend you to do with me. Okay, so copy this one and paste here. So in this code, we have created the transporter from the node mailer. Here we have service. You are using the service of the Gmail. We are using the host smtpgmail.com. Okay, this is the protocol. I have provided the link for this in the last video. And the secure is default and port we are using it 587. And this is your authentication. Basically, you are using the Gmail here. So you are providing your Gmail and the password. In the last video, I have showed you how to create your app password. Your general password is not work here. Okay. So if you haven't watched my last video, I recommend you to watch that video and create your own app password to put here. Okay. Then we have to create a class here. So write class, then mail. So first we have to create our constructor. Then this transporter, we do not need transporter. Then we have to write these dot options. Let it be mail option, which return an object. Okay, just close this one. So what it take? Go to your index file. In the last video, we have created this mail options. So we need from to subject and text. But here, what we'll do, we only write the from, and we will in the last video. Okay. So in the last video here, we have just provided the our mail ID.
sender mail ID. But in this video, what we will write two things. First is address, which is basically your email, and then your name, to which name you are want to send. You can write here your company name, but I am writing my name here. Okay. Then create here methods, your methods, what you whatever method you need, I will show you. So do you know what is the difference between method and the function? Method are the one which is called inside our class, and it does not return anything, do not return anything. But in function called globally, I mean return globally, which is used to do a work certain times, basically the work which are repeating, you can create a function to do that work. Okay. So create a function, I mean method here to whom you want to send to, right? To state, okay, right? Set to whom you want to send is take a. So remember, you do not need to write function here because it is a method. So whom you want to send, uh, provide the email here. Image is declare, but its value is never read. Okay, we are going to read this value here. So what you have to write? Right, this dot mail options dot to email. Okay. Okay, we have written the wrong email. My laptop is a little bit slow. Okay, it is it. So if you see here in the index file, two, we are using the two tools whom you want to send the mail. Then our subject and the text. So let me pause the video and the write whole code, and then I will explain you each line. Okay. So I have written all the codes. Let me show you once. So first we have created the node miller transporter here. Node miller.create transporter. I have explained you already. Then we have created this mail class. Then this is our constructor, which basically return an object mail options, which contain the form. In the form we have address and the name. Address is basically your email address, and the name is you can write your company name, your own name, and whatever you want to show in the email. So I will show you. Let me show you. So as you see here is written an NSE alerts. Okay, in this place you can write your own name and something like as you see its email address is this one, but it's showing this. Okay. Okay, come here. Then I have defined this function here. So how can you define your own function? If you hover on this function, okay, it will show the method. It will tell you what this method is. So here, this is a method mail dot set method. How can you use? You can use this method in this way, mail dot set company name. Basically here you can write your own company name. Okay. Then this is a void method which basically does not return anything. Then here is the basically we have written this set the name of the company that is sending the email, basically about the company name, and params string basically is stating the, basically it is taking the string as params. Okay, basically we have defined the function. So how can you define a function? You have to put the two stick with a slash and at the end of a slash. So let me show you a function. Let me write a function to show you how can you create your write up. So I have written a function called sum, which take two arguments a and b, and return a plus b. Okay. So how can you define a function? You have to write a slash first, then put two asterisk and hit enter. It will automatically, my VS Code is automatically giving me a suggestion. So if I hover now, so you can see this. This is a function sum a, which is a type of any, and the b is any type, and returning is any type. Okay. So if you want to give more information about this function, you can write here. Let me show you. I'll write this function will return sum of a and b. Okay. So if you now hover on this function, okay, so you can see that this function will return sum of a and b. You can explore this one by writing your own function and defining that one. Okay. So come to the point. Set to whom you want to send, basically that receiver one. So this is the this dot mail option to send receiver. After that, this is the set subject, what your subject basically email regarding to which part. Okay. Then text. So then HTML. I will show you how to how you can send the HTML in this video.
sorry, in this we are not going to send the HTML in this video, but I will show you how can you send HTML in the next video. Okay, and this is our the final function, which is the send. So what we are doing here, transporter. In the last video, we have write this code. So I don't think I have to explain this one again. So okay, let me explain. So basically, this is the transporter where it is coming from. So at the top, we have created a transporter from the create transporter of the node mailer. So from there, we are getting the transporter. So this is a function, and basically this can be a method. You can say that this is a method which take the argument as the mail option and returning this callback, basically taking a callback of error and the info. If this works successfully, basically this will send a mail successfully. This will console this line email sent information, okay, email information, and if not, it will console this error. What's the error occurred in sending the mail? Okay, so come to this index page. So we have written some code. Let it erase. Let me erase it. We don't need code right now. I mean, don't need it. So if you want me to create a UI for this, how can you use in your front end? How to control this node builder from your front end? You can comment on this video, okay? But now we are going to use this from here, from this slash endpoint. So what we have to write? First, we have to get this class one, okay? The class name is mail, okay? So what we have to write? Const mail, okay? It is the e require mail. We are getting this mail. We can also get the mail here, mail mail required, okay, required mail front of we are getting the mail, is the e here. So go to the mail once here. So if you see, we have this address and the name, so we do not need to pass this one set company name and the this one set sender email, okay? So whom you want to send, just like just we have to write here mail dot to send to set to, okay, go to what's the method name, go to here. So this is the set to. So what we have to write? We have to write set to. I think this is right. Okay, set to. So I have write my own email. So basically, I have written my email on in the env. So I will get from that in there process dot env dot email to. Okay. Then what's our subject? Subject. So hello world, let it be. Hello from the Lord Ritik. This is D. Lord Ritik. Okay. Then what our text? Hello from the Lord. Let it be. Okay. May make some change in the subject. So write here subject. Do this kind of joke with your friend. Send him the email and write subject in the subject place. Send. So I think our setup is complete right now. And last function is send. Okay. So we have to test is it working or not. So first we have to start our server. Nodemon index. Okay, our service crashed. But why? Requires, okay, we have right somewhere. Okay. So go to the top. It is as again our service is crashed. Okay, what we are doing wrong? Internal module Node.js cannot find the module node mailer. Okay, we have written a mailer spelling wrong here. Mailer. Okay. Now our app is working fine. So go to your browser and write localhost 9000 because our service is running on the 9000. Okay. So again we are getting I think error. So what is the error? Mail is not a constructor. Okay. Okay, we haven't export this mail. That's why we are getting this error. So what we have to write? Module dot export mail. Okay. Then now it will work, I think. So go to your
index.js mail. We are getting the mail from this mail. Okay, then reload once. Again, we are getting a error. Mail.subject is not a function. So we have write this subject, go to the mail and check if we have any method name with the subject. So we have set subject. So copy it and go to your index, paste here in the subject and reload once. Again, we are getting a error. So what's the error right now? No reception defined. Okay, it is not getting this email dot to whom you want to send. Basically, it is not getting from the env. So what you have to do, close this terminal once and restart it. So I have to put here to email, not email to. Okay, now it will work, I think. So go to your browser, reload once. So right now we are not getting. Okay, we have sent the mail successfully. Go to your mail and check once. So if you see, we are getting the mail from Ultimate Coding Beast, whose email ID is Munna Michael. Okay, so let's open this one once. So we are getting from hello from the Lord Ethic. Okay, so I hope you have enjoyed this video, and if you have learned anything, please like and comment and subscribe if you haven't subscribed, and please watch the whole series of this node builder. I will show you how you can create templates like this one is Spotify and other ones also. You can mail me here. Okay, you can where you can mail me. This is my mail ID. I am ritiraj0@gmail.com. You can mail me here. Okay, which type of template you want to generate, or you can show me what you want to do from this node mailer, or you can comment me also. So bye, meet you in the next module of this series. Hey guys, welcome back to my another video. So in the last video we have written an organized code of this node mailer, and in the last video I have told you to I will show you how you can send this how you can send the HTML from your Node.js server using node mailer. Okay, so in the last video we have written this code. We have created this class and transporter, and from the index file we are using this slash endpoint for sending the mail. So I have written this code right now where we are using the mail endpoint, and which is a post request where we are getting this receiver ID, subject, text, and HTML from the body. And what we are doing, we are getting a mail object from mail class. Then we are setting the receiver ID. Basically, this is the mail ID of receiver. Then subject. After that, we have text and HTML from front end. We will get it from front end basically. So let's check it. Is it working or not? Go to your. I'm using an extension named Thunder Client for sending request, doing post request. So first we have to start our server. Okay, so what we have to write here, you have to write 9000 because I'm using the 9000 port and mail endpoint. Then this is subject email. Okay, we have to erase it. And what we need here, we need receiver subject text. Okay, let's copy once. Receiver ID, we have already subject here. Then what we need, text, I think. After that we need HTML. Okay, so receiver ID, let me enter my ID here, ritikra0@gmail.com. Then text, this is my text and HTML. So first we have to try, we'll try sending HTML. Basically I will write here, please. So please subscribe my channel here. Then let's hit the send button. So if you see, we are getting an error, title is error cannot get. So we are requesting in the get, but we have to post here, not dragon. So as you say,
email sent, and we receive the response ID. Okay, then go to your mail and check. So if you see we have received email from ultimate coding with whose email ID is this. Let's open it once. So if you see this is a h1 tag, please subscribe my channel. So please, if you haven't subscribed, please subscribe now. So what can we do here? Let's check out. So try once changing the color of this text. So we are using the inline style right now. Style. Okay. I have to use single quote here because we are using double quote in the JSON. Okay. So style color. Okay. Red. Only red. And send. So as you see, we have receive again. So if you see, we are getting the HTML h1 tag. Please subscribe my channel in the red color. Okay. So this is a quite, what you can say, boring, sending HTML and writing HTML and sending this in the inline text. So what we can do, we can make it dynamic. Okay. So how can you make it dynamic? In the front end, you can create front end for it. But what we can do here, I will create a HTML file here and I will try to send it. But okay, let me create first taste.html. I've created this HTML content from the ChatGPT and I have pasted here. So if you see, we have a user here and we have to replace it by user name. So let's try to send it right now first. So what can we do here instead of this? Okay, first I have to teach you how you can read any file. So for reading any file, we need a module called fs. So fs equal to require fs. Okay. So to read file, what we have to write? So we do not want to check right now. First, we have to read this file. Read file synchronously, and this one. Okay, remove that one. Okay. So it is getting okay. Let's make it mail. Okay. It is this file and write its name mail dot html. Okay. So it sounds good because mail html and okay. So what we'll need here, we'll get the data, html data. So we'll write html data and we'll put html data and also we will console here. Now just try to send this file, I mean this HTML content. As you see, it is consoling and also it sends that file, I mean that HTML content. So let's go here. So if you see, we are getting this. So if you see, we have received this welcome to our website, dear user. So what we have to do, we have to edit this user to actual username. So suppose we will get username from our front end. So we will put here name here, name. Let it be Ritik Raj. Okay. Then go to your index file. So before setting it, what we have to do, also we have to get name here from here and remove it here. So keep it down a little bit. HTML dot HTML data dot replace name by actual name. Okay. So now let's try to send this. So go to here, go back once. So as you see, we have received this email right now. Open it once. So as you see, this is the Gmail logo. So if you see this again, it is sending dear user, but we want name of user here. So something went wrong here. Go here, and what we have done wrong name. Okay, go here once. This is username underscore. Okay,
copy it here. Okay, we have to replace this from our actual name. Okay, so try on sending this email sent successfully. Okay, let it generate response. So this is the response ID. Go to here, go back once, open it. So if you see, we are getting our name, dear Ritik Raj. Okay, so in this way you can generate your own template, and you can edit it as you require. So in the next video, we will see how you can generate actual template like this. We will show how you can send the image and this type of stuff. So if you find this video interesting and you have learned something new, please like this video, and if you haven't subscribed our channel, please subscribe and comment what you have like and what you want more from this video and in this node mailer series. Okay, so bye, see you in the next video. Hey guys, welcome back to my another video of this node mailer series. So in this video, I am going to show you how you can send a mail to the multiple receivers and how to mention CC and BCC. Okay, so let's go to the code here. Okay, set 2. Here in the set 2, what we have done. Okay, so remove this one right now. What we'll do here, we will create a array here. Let uh, receiver equal to this one, or we can what we have to do this dot mail option 2. If we already have a array, then we will get that array, or we can initialize with a empty array. Okay, after that what we will do, we will write receiver dot push receiver. Okay, let it write here receivers. Okay, and do it receivers. Then after that what we have to do, this dot mail option to set to these receivers that array. So in this way we can send this same mail to the multiple receivers. Okay, after that what we have to do, we have to uh, mention for BCC and CC. So what we have to write, we have to write set CC, and we will receive CC here. And in the same way, what we will do, we will just copy it and put here and CCS. Okay, that means multiple CC, and do here CC. Then okay, do CCS, then CC, and here CCS, and here CC. Okay, so I hope it is clear. And same for BCC. Copy and paste again. Don't worry, I will show you practically. BC, just put everywhere B. Okay, before C. So I think everything is right. Okay, so we have done CC and BCC with okay BCC. Okay, okay, B here. So now it is all done. Let's check it. It's working or not. So what can we do? We will not going to use this right now because it will work same. So but it's consumed some time. So to save time, what we'll do, we will write a function here and we will try with it. Okay, so let me pause this video now. So I have written my email IDs, which I am going to use as CC and VCC. And so I have written in the env file, and we are getting as process.env.bcc and cc. And here I have to call this send mail function, which is basically containing this, which is creating a mail object from the mail class, as we already done this previously. So let me uncomment this. So if you see, we have received a response here. So let's check our email. Okay, if you see, we have received here. Okay, and we have also received here, and we have also received here. So if I open here, okay, and if I do here, so you can see we have, it is mentioned here CC and this mail ID. Okay, if you see from ultimate coding base, whose email address is this, to I am ritik0@gmail.com, CC is this. And if you see, it's not showing anywhere BCC, but we are getting the email as BCC also. Sorry, this one not here. Okay, so I hope this is clear. For the BCC, you can mention the BCC and CC, and you can send the multiple mail at the same time. So let's see how can you send the multiple message at the same time. Okay.
Let's remove this one. And what can we do right now? Let's comment this one. And what can we do? Okay. Okay. We'll just write here. Okay. Set to, and also let's see we will get or not. We get or not on this mail ID. So let's uncomment this function right now. So if you see we have received this response, so let's comment this call and go back once. So if you see we have received here, we have also received here. Okay, and the last we have also received here. So if you see we are receiving the mail at the same time. That means we are able to send the multiple mails. So that's all for this video. In the next video we will see how you can send the attachments like files. Okay, so bye, meet you in the next video. And before that, please like, because if you like this video, I got the motivation of making more videos like this. Bye. Hey everyone, so in the last video we have seen the how you can send mails to the multiple person at the same time, and you can also mention the CC and the BCC. Okay, but in this video we are going to see how can you send the files, or you can send the attachments. So this is the Node Miller site. Here you can see how you can send the file content. Okay, so you can read this. I will put this link in the description box, or you can also search, but I will show you in practical by doing practical basically. So what we have to do first, we have to create a method here, set attachment. Okay, and we will take attachments here. In this we will, what we will do, we will create a array first. So we will write let attachments equal to mail option dot attachments. So let's do it attachment here, not attachments. Okay, so what will it do? It will check here, is this okay, is this constructor containing any attachment or not. If not, it will, what will it do? It will create a empty object, empty array to create attachments. Okay, else it will take a tag that attachment array, and we will put new attachment in that one. Okay, so this is it, and we have to set this dot mail options dot attachments equal to new attachments. Okay, so that's it. And also what we have to do, you go at the top and you have to write this one fs, require fs, which is fs basically is, so you can read here fs is declare, but okay, this is not. So fs module is basically a file system module which is which is used to read the file and directly also, and this is the path where that file is basically. Okay, so we are going to use this function again to set attachments. So we can write here mail dot set attachment basically, and we will put object here which take basically three things. First is the file name, then after path name, and cid I will explain this. So this is enough, I think, file and the file path, where that file. So let's test it. Let's first run this terminal again and uncomment this function call. So if you see we have received an error, so let's see what the error is. So if you see we have received okay, this is here mail dot set attachment, and what our function name is. So our function name is set attachments. So we have to write here attachments. So it will work now, I think. So let's see, is it work or not. So if you see it sends the message successfully. Let's see if we have received or not. So if you see we have received image here, which is this is image.
So let's open this. So this image we have sent it right now. So if you see, this is the static, how we are sending the file as a static material, which is basically in our folder here. But I will show you, I will basically teach you in this series how can you send the file dynamically, basically from the front end side. So at that point we have to use Multer to get the file. So I will show you in the upcoming videos. So that's it's for this video. If you like this video, please like and subscribe if you haven't subscribed. And I need motivation, little bit of motivation. So let's do it. Hey, welcome back to my another video. So in this Nodemiller series, in the last video we have able to send the file. In this video we are going to send HTML with image. Okay. So if you go back, I mean if I go back and open this Spotify, if you see we have image here. Okay, in the Spotify template. So let's see how can we send the image in the HTML. Okay, we are able to send this attachment, and we in this video we are going to send image in the HTML file. Okay, let's open this. So this is a basic template we have used in our previous videos. So let's erase it everything, and what we'll write, we will just get a image here. So src, and we will get image from dot slash image one. Okay, I have image in this file. So let's open in the live server. See, we are getting the image here. So let's send the image in the mail. So go to the where in the mail, yes, and this time we have to read the file. So let HTML file data equal to fs dot read file synchronously path dot join directory name and mail is perfect. We are getting everything. So right here mail dot html. Okay, set html, and we have to put html file data. Okay, so everything is right now. So what we have to do, let's remove this attachment file, and I think my terminal is already running. And okay, let's see we have received anything or not. So if you see, we have received multiple things, I mean 3 mails. So let's open. So last, okay, so we haven't received the new mail. So delete it right now and go to the terminal. So comment this once and uncomment. Let's see we are getting the image or not. So if you see, we have received the response, that means email is sended. So if you see, we have received the mail, but this image is not opened. So what can we do? So let's go to the Nodemail site and see a different thing, which is uh, let's see where it is. So if you see, we have this SADI option here. So we have to use this SADI option to open that image in the HTML. So let's go to HTML file. So what we have to do here, let's write cid and image.png. I think this will work. So where it is, okay, embedded image. So okay, you have to go to embedded image. So basically this is the cid ones. That's not cid, that one not. So FPC, this is okay. So this is cid one image one, and go to the mail options, and what we have to write here, mail dot set attachments, and we have to create a object. Okay, object here, not add a object, and we have to write mail path one
path, this is the path, CID image1 and content type image2. So everything is perfect. So let's see we are getting or not. So go back. So again, okay, go back once, delete this one, and comment this function call and uncomment now. So let's see we are getting an image or not. So still we are not getting image. So let's debug why we are not getting image, but we are getting as attachment. But we do not want at attachment. We want as HTML. Okay. So go in the embedded file. So let's see how it's doing here. So same value settable as the HTML src. Okay. So we have to write same as. So we have to write image.png here also. Then comment this and uncomment this. So let's go to email here. Go back once. Okay, we have received. So let's open. So if you see, we are receiving image as open image. Okay, in the HTML itself. Okay. So I hope this video is knowledgeable, and if you think it is, please like this video. So if you like this video, I got the some motivations to make more videos like this, and please subscribe also if you haven't, and do share, and do not forget to comment what you want, and I mean what you do not want, but basically in the code sense, whatever video you want, I know what you want basically. Okay, so let's see in the next video. Hey everyone, welcome back to my another video. So in this video, we are going to make this template, Spotify template. So in the last video, we have learned how to send the embedded image attachments and everything. So if you haven't watched that video, I have provided the link in the description as well as in the I link. So go and watch that video also. And one of my humble requests is please like this video because I'm not getting any likes and comment. So please do support, guys. I need really need your support. Thank you. So let's move how to build this type of template. So let's go to the code. So first we have to make a HTML file. So spotify.html. So in this file, we will write all the HTML code. Okay. So let's see again the design pattern. Okay. These are divided into the some parts. So let's it be first part, then second part, and it is with third, then fourth. So there must be the four or maybe more than four parts. So let's start building. So first we will build this part, red part. Set the scenes with the mood music. Okay, let's go and build that. So first we have to make a main container. Basically, let's be main, and we will also write the style first. Okay, style, and we will use same. If you see, there is a font. We will use Roboto font here. So we will write font family Roboto. Okay, this font contain Roboto also. So we will use this font. So then go to the main. We'll write style for main class. Okay, there be main, not male. Main. We will write and give style to the margin. Basically 0, then 20%, 20% not pixel. Okay, then there is first container. So let it be M1, main one, or C1. Oh, sorry. Why it is not working? Okay, C1. So let's write the style of C1. So we will write C1 background color red, and yeah. Okay. After that, it what it contain. So let's go here. So it's have a Spotify logo. Then set the scene with music mode. So let's copy it, and we will embed both. So right here. So let it be S3. Okay. Okay. And image here. It's a Spotify icon. Okay. Okay. So dot slash images Spotify icon. So I have all the images in this folder, images folder. If you go, there is more than
six or seven images. So I have all image in this folder. So let's open it with the live server and check what we are getting. So if you see, we are getting a very large logo of Spotify. So let's correct it. So we'll write here logo, and we will set the width of the 200 pixel, and we will also write a class here dot class. Okay, then if you see, we are getting good. We are good to go. So then go to the main and sorry, this is okay, C1. So we will write the stuff for the C1. We will write text line center to get the text in the center. Okay, we are getting image all in the center. It's good, and we will give the color somewhat green. I think there is a green color. So let's check once. Okay, it's white and green, mixture of white and green. So where? So I think it's good. Okay, and the font size, maybe 30 pixel. Okay, that's pretty cool. So let's check it. So give it a more little bit, 50 pixel, and also what we have to do, font weight. Okay, bold. So that's pretty cool. So let's give it some padding here. Let it be padding of the 20 pixel. So we are good to go. Then go to the next section. So if you see, we have the generals. So we have to put this section. Okay, let's go to here. So let's make another div C2, and we will write the code here. Okay. And then again. So same we are getting, and let's see here. Okay. Then write the style for the C2. Okay. So we'll write the text line center and padding 20 pixel. Is it good? Now we have to make a bottom also here. So let's P3, and we will create a bottom here. Okay, button, and go here. Listen now. Okay. So listen, let's give the some CSS to it. Let's go here. So we are getting here, and we have to give CSS to it, and also some CSS to this text. Okay, we have to give some CSS to this also. So let's go here, and we will write C2. So what we have done, we have give some CSS property to this 20 pixels, font size is 20 pixel, and then line height is 10 pixel. Okay, p is small. Okay, then we have to also give class to the bottom there. So C3 margin top. Okay, not bottom, top. Let it be 50 pixel. Okay, explain center. So we are getting the bottom at the center. Then we will put some CSS to the bottom there. Okay, so background color black, color white. I think it is good. Okay, go here. So we're getting, but we have to put a padding and margin. Sorry, only padding. Okay, this is 20 pixel. Then so 20 pixel at the bottom and the top, and 50 pixel right and left. So it is good. Now we have to do. We have to give border radius. Border radius. Let it be 50 pixel. So it is good. If you go here, so there should be more than 50 pixel. Let make it 70. Okay. Okay. Now it is good. Similar to it, and we also put a bold. Text is bold. So we will write font weight bold. Okay. So it is good now. Let's move to the next section. So now it is now this is a very important section. We have to put image here. So let's go and see how can we put image. Then we have to make another section. Let it be F4. Okay, dot F4. Okay. So if you try to give the CSS property of the grid, if you want to use the grid will not work here. So because the Node do not support, Node and the Gmail do not support the style properly. Okay. So what we have to do, we have to use div here exactly. Okay.
So how can we use? Let's see how we are going to use. So we will make a three class. We have okay. We have 3 rows, so we will make 3 class. So we will write mg bottom 3. See, we get the 3 class here. So in each class we have to make 3 different things. So not 3 different things. So basically we have to put the image. So we'll write image, and in the src we have to write image slash image. Okay, let it be 1 right now, and we'll write Spotify itself here. Oh, okay, let it be Spotify, then copy, hit enter and paste again. Okay, so we are getting the 2 image in the each one. So what we have to do now, let's check in the how we are getting the output here. So if you see, we are getting the output quite similar to it. Okay, but it is not at the center, so we have to put in the center. So let's go to the top and give some property to f4. Okay, margin, okay, let it be 20 pixel and it's 0 pixel. Okay, so now it is good. Okay, uh, text align center. Okay, we are getting the center now. That's good. That's good. Then we have to write. We have to give. So let's give some style to the image. C4 dot. Okay, let it be image bottom, and under it we have images. All the images. Then we will write width. Let it be 300 pixel or 200. Okay, let it be 200 pixel. Then margin. So we will give some margin of the 5 pixel itself. So that's pretty good. So it's similar to this now. If you give, okay. So let's increase the sum size, make it 250. Okay. So now it is good. Okay, we will correct at the final time. So let it be here, and let's move to the another section at the bottom. So at the bottom we have only the div with the red color. So let's go at the bottom, and we will write c dot 5, I think. So this is 5. Okay, and we will give the css to it. So we'll write dot c5, background color red, then height 100 pixel. Okay, that's good, I think. So we are getting same thing. Okay, after that we have another section of this. So we see we have a gray color at the background. Okay, so at the last, so C6. Okay, so let's see what we have. So if you see, we have a logo here, Spotify logo. Then we have some padding here, both side and at the bottom also. So we will give some css to it. So let's go at the top and write c. Okay, c6, background color gray. It would be light gray. Okay, go at the top, at the top. Okay, that's good. And we will put some padding also. Padding 30 pixel and 20 pixel. That's great. After that, the Spotify logo. So go at the bottom and okay, image Spotify PNG. So see, we are getting or not. Okay, we are getting so it Spotify icon. Okay, we are getting the right one. So we will put some. Okay, we have already written style for it. So give it class to logo, and if you see, we are getting good. Okay, then yeah. So then go to the this email here. Then if you see, we have HR tag here, line, and also either deadline also. So go bottom HR. Okay. So see, if we are getting, so we can change the width or I mean height according to our need. So okay, after that we have this line get Spotify for iPhone, iPad. So let me write it. I will show you this same output as this one. So if you see, we need some of the margin at the top and the bottom, so we will put here. So by the way, this is the code what we are using basically. Okay, so okay, we are not using the device class here. So I will put the style color. Okay, and we will write here another property of the margin. Okay, then we need at the top and the bottom, so we'll write 20 pixel and the 0 pixel. So let's see. Okay, now we are getting the good. Okay, and the at the top at the bottom we want this output. So let's see how we are getting. So if you see, we are what we have used here.
So we will write in the simple div get Spotify for, and then we will use span. In the span, we have used the font font weight bold for this type of output. Okay. Then we have used this. So if you say this is basically a p tag with some a tag, and then span we can use span to make it bold. Okay. So let's do it. So let's copy and paste here. Okay. So this is a blue. Okay. Let's make it. So we will reuse here a tag. Okay. Let's see what we are getting. Okay, we have to close here also. We haven't closed. Okay, now we are getting same as this one. So basically a little bit a different color, but yeah, you can manage it. We can manage it basically. Okay, so let's go again. Yeah, and at the bottom we have to make it bold. Edit your profile and unsubscribe. So right here, give the cursor here and here also. So right, span, style. Okay, font weight, bold. Then okay, that's it. Then again open span, closing span. Okay. So that's good, I think. Let's see we have get or not what we want. So basically we have two closing span, but we want only one. So what we'll do, we will remove one, and what can we do other than this? Okay. Then okay, here close this one and remove this one. Also close here and remove this one. Okay. So let's see output. So if you see we are getting the okay, this is the male one. Okay, we are getting the same, but if you see this is black and here is a little bit gray color. Okay. So we will write the CSS. Okay, C6. So we will write here color also gray. So let's see. So we see we are getting the same output as that one. So let's send to the our mail test. So let's test the in the mail. So we'll write Spotify dot html and we'll send it. But before we have to okay, we have been to change here our image name 1, 2, 3. So we have basically 8 images. So we will write. We have to set it as attachment also. So set attachment. Can and we will pass the object here. So we'll write file name basically. So first we are sending the Spotify png, then okay, after that we have to set the path also. And then okay, then again we have another picture Spotify. Okay, no, so we see we are going to send Spotify icon. Okay, so directory name is Spotify icon and icon. We have two icon, different icon, and at the top on bottom also we will write underscore icon. And yeah, and okay. So we have 6 different image, but I have written the image name as image 1, 2, 3. So we will use for loop here. Okay, greater equal to 6 because we have 6 image, and we will use for loop to set it. Okay, we are not going to write 6 time. Okay, so we will write Spotify file name, then backticks. Then we will write okay, not Spotify. This is img image 1. Okay, we have image 1 png, then we have to give the path where is that image. So path directory name image 1. Okay, then we have to write cid. So basically we are not using cid. So let's see what we are getting if we do not use cid here. So let's run our terminal node mail js. Okay, so let's see. So my function is already called, so we are getting the image set attachment. Okay, so I think my function name is set attach. Okay, that's attachment already. So let's see what we are getting, why we are getting the wrong. Set attach is not defined. Okay, but we have this method here at the top. If you see set attachment. Okay, so let's go bottom, see what we are doing wrong here. Okay, set attachment. Okay, mail. Okay, we have to write mail dot set attachment here now. Okay, now let's check.
So we are getting the same. Oh, okay, we are getting the another error. No such file directory opens. Project Nodemiller MG. Okay, it's going to this folder Nodemiller, but not going to the image. So what we have to do? We have to write here slash image images. Also here images, and at the bottom also images. So let's see. So if you see, it sends the email successfully. We get the response here. So let's check. Go back once. So if you see, we have received an email here. Let's open it. So if you see, we get the attachment at the bottom, but we haven't received the image here. So at the last time, I have taught you how to send the embedded image. Okay, and also if you haven't watched, please check out my previous videos. I will put the link in the description box. Okay, so let's see how can we send this image. So go to the Spotify HTML where we are working, and what we will write? We will write here CID. Okay, that's good enough. So CID image. So we have to write CID everywhere and a unique name for each image. So let me write everywhere. So we have changed the image name CID, CID column image one image two just like this, and we have also changed this logo from image logo to CID Spotify icon. Okay, then at the top we also have logo, another logo. So we also write here CID column. Okay, then remove this change, then go to the mail here, and okay, now file image go CID is this. Okay, CID is our icon, and here underscore icon, and here image one to okay. So let's see we are getting or not. So if you see we have received a response here. So let's check we have received or not. So this is the mail we have received. Okay, at the bottom. Okay, here. So if you see we have received image here, but if you see we are getting the download and add drive save to for to these type of options. Here also we are getting these options. So but we have achieved that template what I told you what we have in the Spotify, but in this template we are not getting that option. So let's see how can we remove that option, or what can we do. So let's go here, and so in the file attachment, Node do not provide anything which remove the option of the download and add to this. So what can we do? So we can just make it as a background image of our bottom. So let's see how can we do it. So we'll write bottom. Okay, then okay, style background image is CD image one. Okay, and yeah, remove that one. CD image two. So let me write all the. So we have all changed all the image tag to the bottom, and we have changed the background bottom to the image, and we have to give some style to it like width and height. So let's see if we have given some style to our image or not. So go at the top. So if you see image bottom and this, so we have given the style to our image. Let's change this to bottom. Okay, then width is same, and we have to also write for the height. So height is 250. Okay, so now let's see. So comment and uncomment this. So we have received response, that means email is sent. So let's go. So if you see we have received here, so go at the bottom. Okay, so if you see we are not getting that option of download and add to drive just like that, but we are getting at the top. Okay, we are also not getting at the top. That's surprising. So if you see image is not aligned at the center, so what can we do? And also see the bottom part. So if we see we are at the bottom, we are getting the download option and this type option. So as I showed you, how can you remove that option using the background image? You can do it for on this also. And so let's see how can you send this image. So go at the code first. Go at the okay at the HTML file. Go to the in the styling part, and we have to write border none. Then also we have to write border. Okay, background size is covered. Yeah, to cover this. And one which we feature what we write background position to the center. Okay, that's great. So let's send it and try once again. By the way, if you want to see whole code, I will show you in the end of this video, so wait for it. So let's uncomment it.
So we have received the response here. So go to the email and let's click on the show and go bottom. So if you see, image is now sent at the center, and it is exactly like this one, the this one. So it is a little bit small, but our is a little bit bigger than that one. So we can manage it with the, we can adjust the height and width. So does it not matter more? So that's it. And let's go to the code part. So as I told you, I will show the code here. So go at the bottom. So first line is require.env to get the cadences from the .env file. Then we are calling the node mailer here. Okay. Then fs, which is the file system. Then path to get the part of the file. Here we have created the transporter. Okay, where we are using the service Gmail, host, SMTP, secure calls, and auth. Basically, this is the email ID and this is the password. So how can you generate the password? You can see that video. I will put the I in the I link or in the description box. You can watch the whole series. Okay, and this is the mail class where we have created all the methods and the constructors. So in the constructors, we have all the options which we want to send in the mail. So this is the form which will show where this email you have received to the receiver. That's like that. Here we have received the email from Ultimate Coding Best, but our sender ID is basically the email ID is this one, and you can do this like from using this from, and in the address we will put the email ID and in the name what your company name or what you want to send to show your name in the name one. Okay. Then here is the set. Basically, these are the method and these are the method definition I taught you in the previous video. So yeah, that's it. And these all are the methods at the query bottom. Okay. So this is the send method where we send the mail. So you can make it promise here also. If you want to use, so you will get and receive the response from it. In the upcoming video, I will show you how can you make it a promise here. Okay. Yeah, that's it for video. So if you find this video useful, please like and subscribe, and please do it, please, 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 please. So that's it. Thank you. Hey guys, welcome to my another video. So सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यार बस बोला था 10 लाइक कर दो यार, 10 समझ रहे हो, 10 बस 10 लाइक बोले थे करने। यार वो भी नहीं हो पाया, व्यू आता है यार, ना तो सब्सक्राइब होता है ना ही क्या बोलते हैं लाइक होता है। यार कुछ तो कर दो, लाइक ही कर दो, डिसलाइक ही कर दो, कुछ पसंद ना आए तो कमेंट भी कर दो, कुछ तो कर दो। सो कम टू द पॉइंट। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले ये एक इंटरफेस है। यहाँ पे मैंने ई जे एस यूज किया है नोड जे एस के साथ। ओके, तो आज करने क्या वाले हैं, इफ़ यू से दिस इज आवर लॉगिन पेज। एंड कई बार क्या होता है, हमें फॉरगेट पासवर्ड बनाना होता है, और उस पासवर्ड में क्या होता है, ओटीपी चाहिए होता है साथ में। वो ओटीपी वैलिड होना चाहिए बस 5 मिनट्स के लिए, तो हम लोग वही बनाने वाले हैं आज। तो देखो कैसे बनता है। तो सबसे पहले पहले देखते हैं ये कैसे हो रहा है। तो फॉरगेट पासवर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, ईमेल डालता हूँ अपना एंड सबमिट करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ रिलोड हो रहा है अभी। ओके, तो मेरे मुझे ईमेल आ गया है, बैक लगता है, ये पुराना ईमेल है, न्यू ईमेल अभी आएगा। ओके, ये आ चुका है। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यू ईमेल, आई मीन ओटीपी है, तो इसे कॉपी करते हैं एंड पेस्ट इट है एंड लेट्स क्लिक ऑन वेरीफाई। तो देखो ये वेरीफाई हो चुका है एंड या यू कैन क्लिक हेयर टू लॉग आउट। चलो देखते हैं इसे कैसे बनाया जा सकता है। सो जिसने भी हमारा वीडियो शुरू से देखा होगा, आई मीन दिस नोड मिलर सीरीज, तो उसे पता होगा हमारे पास एक मेल जेस का एक क्लास है, मेल जेस आई मीन मेल क्लास है, जिसमें हम अपनी नोड मिलर क्लास को हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ये बॉक्स बना के रख दिया है, एड बना के, जो कि आई डोंट थिंक इसका कोई नीड है, बस मैंने बना दिया है क्योंकि मुझे पसंद है थोड़ा। और ये सब मेथड है, अगर आप लोगों को शुरू से देखना है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच द होल प्ले लिस्ट ऑफ दिस नोट बिलर सीरीज। ओके, एंड लास्ट चेंज मैंने यहाँ पे किया हुआ है, थोड़ा सा मैंने बस प्रॉमिस सेट किया है ताकि मुझे रिस्पॉन्स में कुछ मिले जब मेरा ये जो मेल जो है वो सेंड हो जाए। ओके, बस इतना ही किया मैंने। तो चलते हैं इंडेक्स जेएस में। ओके, इंडेक्स जेएस में सबसे पहले अपना इन पॉइंट देखते हैं। पहला इन पॉइंट मेरा ये जेट स्लैश है, जो कि बेसिकली होम स्लैश है। तो इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ कुकीज़ के लिए इज लॉगिन। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुकीज़ नहीं बनाया, आई मीन टोकन ये सब नहीं बनाया, बस मैं चेक कर रहा हूँ कुछ है या आई मीन ट्रू है या नहीं है, और नल है। अगर ट्रू है तो मैं इसे क्या करूँगा, इंडेक्स पेज पे भेजूंगा, और फॉल्स है तो मैं इसे लॉगिन पेज पे भेजूंगा। बस मेरा हमारा इसका इतना ही काम है, गेट का स्लैश इन पॉइंट का। ओके, तो चलते हैं लॉगिन पे पहले। ठीक है, एंड दिस इज़ द राउट। बेसिकली आप राउट लेके बहुत सारा चीज़ हैंडल कर सकते हो, जैसे गेट राउट को पोस्ट राउट को एक साथ ही हैंडल कर सकते हो एक ही एंड पॉइंट पे। ओके, आपको बार बार लिखना ही नहीं पड़ेगा, ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पोस्ट, आप राउट लिखो उसके बाद डॉट डॉट लगाते चलो, अपना जो भी मेथड है वो कॉल करते चलो, जैसे मैंने गेट किया है पोस्ट किया उस तरह से। ओके,
तो अगर लॉगिन भी गेट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रेंडर लॉगिन कर देंगे। रेंडर लॉगिन कैसे होगा, हमारे एक लॉगिन पेज है, ईजीएस बना हुआ है। अगर आप लोगों को ईजीएस नहीं आता तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा और कुछ करा दूंगा। ओके, अब ये आया कैसे ईजीएस, चलिए इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ईजीएस का। आप वीडियो कैसे भी देख सकते हो। आपको क्या क्या करना होगा ईजीएस सेट करने के लिए, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा ऐप डॉट सेट व्यू इंजन, वो ईजीएस होना चाहिए। एंड ये आपको लगाना पड़ेगा वो व्यू, जो आप जिस फाइल का नाम दे रहे हो वो यहाँ पे होना चाहिए, सेट व्यूज़। ये फोल्डर मेरा व्यूज़ फोल्डर है, ठीक है। और पाथ कहाँ पे है, व्यूज़ के अंदर वो फाइल सारा। बस इतना ही करना रहेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे वापस से। सो गेट पे हमारा इतना ही है। चलो अब लॉगिन पोस्ट पे देखते हैं क्या हो रहा है। पोस्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं और पोस्ट पासवर्ड ले रहे हैं। ओके, बॉडी से लेंगे दोनों ही चीज़। ओके, देन हम क्या करेंगे, डीबी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई डीबी है नहीं, आई मीन एक्चुअल डीबी, जैसे मोंगो डीबी या फिर आई मीन डाटाबेस एसक्यूएल या कुछ भी ऐसा ही। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक छोटा सा डीबी बनाया है एरे, जिसमें मेरा क्या है, एरो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में ईमेल और पासवर्ड साथ में नेम है, ठीक है, बस इतना ही है। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ डीबी पे। फाइंड एक मेथड होता है, ठीक है, एरे का, तो उसमें मैं चेक कर रहा हूँ बस। अब बेसिकली आप फाइंड को ऐसे समझ सकते हो, या एक फॉर लूप लगा हुआ है और जिसमें कि हर एक टाइम्स एक यूजर दे रहा है, बेसिकली क्या बोल सकते हैं उसको, इंडेक्स को पकड़ के वो यूजर दे रहा है। और मैं उसमें मेल और पासवर्ड चेक कर रहा हूँ, अगर दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, अगर नहीं कर रहा है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, या फिर अगर मिला ही नहीं तो भी फॉल्स ही होगा, या फिर नल होगा, तो उसमें इल्स कंडीशन में आ जाएगा। अगर ट्रू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यूजर फॉल्स हो जाएगा, आई मीन यूजर ट्रू है तो यूजर फाउंड हो जाएगा, कंसोल यूजर कर देंगे हम लोग, नीचे में हमें यूजर दिख जाएगा। और कुकीज़ को हम सेट कर देंगे। अगर कुकीज़ आपको सेट करना नहीं आता तो बस ऐसे किया जाता है, थोड़ा सा लिखना रहता है आपको, आर सी डॉट कुकीज़। एंड जो कुकीज़ का जो आपको दो पैरामीटर डालना होगा आपको, बेसिकली की और वैल्यू है, एक तरह से समझ सकते हो। तो इज लॉगिन मैंने यहाँ पे ट्रू डाल दिया, और ये बेसिकली ये दोनों हमेशा स्ट्रिंग ही रहता है, आप कोई भी अलग क्या बोल सकते हैं, डाटा टाइप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। और इसको रीड करने के लिए आपको ये एक पैकेज आएगा कुकीज पार्सर करके, उसे आपको यूज में डालना पड़ेगा एज ए मिडिलवेयर, ठीक है। एंड एनीथिंग मोर अप टू, ओके। ओके, जैसे आएगा मैं उसके बाद बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर ये ट्रू है तो अपना को ये रीडायरेक्ट कर देगा स्लैश पे, जो कि यहाँ है स्लैश, और इससे इंडेक्स रेंडर हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ये पासवर्ड रॉन्ग है तो, या फिर कुछ भी गलत है, फॉल्स आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स और एक रिस्पॉन्स भेज देंगे 401 का, जो कि होता है नोट फाउंड या फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल जो होता है, ठीक है। और लॉगआउट तो सिंपल है, तो लॉगआउट जैसे बटन पे क्लिक करेंगे, चलो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि चलो मैं दिखाते ही चलता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉगिन मैंने किया, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है नीचे, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैंने लॉगिन पे किया था तो हुआ था पोस्ट रिक्वेस्ट। लॉगिन गेट करने पे हमें एक पेज मिला लॉगिन, पोस्ट करने पे हमें क्या मिल रहा है, इससे ईमेल मिल रहा है। यहाँ से मैंने गेट कर लिया, वो मैं फाइंड कर लिया, बेसिकली चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया हमारे डाटाबेस में है या नहीं, ठीक है। वहाँ पे मैच कर लिया पासवर्ड। एंड उसके बाद क्या किया हमने, कंसोल भी कर दिया यूजर फाउंड करके, देखो यूजर फाउंड है, उसके बाद उसका डाटा है यूजर का, ठीक है। एंड उसे होम पे रिडायरेक्ट कर दिया, चलो इतना ठीक है। अब चलते लॉग आउट पे। अगर मैं कुकीज़ दिखाऊँ तुम लोग को, या देखो, अच्छा यहाँ से नहीं, इधर से देखो तो रुक जाओ। तो सबसे पहले आपको जाना होगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी कुकीज़ आपको कुछ देखेगा। तो मैंने जो कुकीज़ सर्च किया हुआ है क्या है, इज लॉगिन, और वो वैल्यू क्या है, ट्रू है। नेम क्या है कुकीज़ का, इज लॉगिन, और वैल्यू क्या है, ट्रू, ठीक है। ऐसे ही रहता है। अभी जैसे मैंने लॉग आउट किया, ठीक है, अब देखो कुकीज़ क्लियर हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आर एस डॉट क्लियर कुकीज़। तो कुकीज़ क्लियर हो गया इज लॉगिन वाला, और हमें वापस किस पे रिडायरेक्ट कर दिया, इज लॉगिन पे, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। देन अपना चलते हैं फॉरगेट पासवर्ड पे, ठीक है। तो समझ लो अब जो यूजर है वो पासवर्ड भूल चुका है, तो हमने क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, अपना ईमेल डालना है इधर, ठीक है, और सबमिट मारना है। तो बस हो गया अपना काम। फॉरगेट पासवर्ड क्रिएट करने पे हमें एक पेज मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड का, जो कि यही था, ठीक है। देन अभी वेरीफाई का आ चुका है, ठीक है। तो हमने जब क्लिक किया फॉरगेट पासवर्ड पे, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं कहूँगा यार मिस मत करना, ठीक है। देखो अभी क्या कर रहे हैं, जब हमने क्लिक किया फॉरगेट पासवर्ड पे, आई मीन नीचे जो बटन आ रहा था ईमेल डालने के बाद, इस सेंड ओटीपी करके वो बोला बटन, तो उस पर हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है वो जो ईमेल है, वो ईमेल बॉडी में मिल रहा है या नहीं। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, वो ईमेल अपने डाटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग भूल जाते हैं, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ओटीपी जनरेट करना है। तो ओटीपी जनरेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर मैंने एक पैकेज यूज किया है, क्रिप्टो रैंडम इंड करके। आप लोग सिंपल सा फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ओ टी पी स्टोरेज डॉट सेट ईमेल एंड पासवर्ड, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो अब ये दिखाता हूँ मैंने एक क्लास बनाया हुआ है
ओटीपी स्टोरेज करके, ठीक है। तो चलो मैं इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, तो ईजी हो जाएगा। तो मैंने एक क्लास बनाया है टेम्प स्टोरेज करके, ठीक है। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है मैं एक स्टोरेज, जिस पर कि मैंने क्या डाला हुआ है, एक मैप। मैप क्या होता है, बेसिकली एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, ठीक है, उस तरह से समझ सकते हो आप। और की वैल्यू पेयर्स टाइप समझ लो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, की वैल्यू पेयर्स, ऑब्जेक्ट ही मानो बट हाँ उसी टाइप का, ठीक है। तो सेट हमने क्या किया, अपना डाल दिया ईमेल, देन ओटीपी, उसके बाद हम लोग क्या डाल रहे हैं, ड्यूरेशन। अभी ड्यूरेशन मैंने बाय डिफॉल्ट कितना डाला हुआ है देखो, 1 2 3 4 5, अप्रोक्स 20 मिनट लगभग ऐसा कुछ डाला हुआ है, उतना मैं काउंट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको 60 डालना है, आई मीन या 5 मिनट डालना है, तो आपको क्या करना होगा, तो 1000 का 1 सेकंड होता है, तो इंटू हम लोग क्या करेंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 मिनट का। अब जो ओटीपी सेट होगा वो 5 मिनट में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। डिलीट कैसे हो जाएगा वो देखते हैं हम। तो हमने क्या कर रहे हैं, दिस डॉट स्टोरेज डॉट सेट ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। इस स्टोरेज में हमने क्या सेट किया, ईमेल और पास ओटीपी जो है वो सेट कर दिया। फिर हमने सेट टाइम आउट यूज कर लिया, जिससे क्या होगा, वो फाइंड करेगा ड्यूरेशन कितना है, 5 मिनट। तो 5 मिनट में हम लोग ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये फंक्शन जो है एनोनस फंक्शन, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो क्या करेगा, दिस डॉट स्टोरेज डॉट डिलीट, डिलीट किसको करेगा, वो जो ईमेल हमने क्रिएट किया था 5 मिनट पहले। तो 5 मिनट पहले जो ईमेल क्रिएट होता वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमने और मेथड भी बनाए हुए हैं, ये तो सेट मेथड था, ये क्या है, वेरीफाई। इसमें क्या कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड हम लोग लेंगे, उसके बाद हम लोग मैच करेंगे। कैसे मैच करेंगे, दिस डॉट स्टोरेज, स्टोरेज पे जाएगा, उसके बाद गेट करेगा ईमेल को। ईमेल गेट करने से क्या मिलेगा, उससे एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी क्या होगा, जो इधर इसको ओटीपी मिलेगा ना, वो होगा एक स्ट्रिंग, आई मीन नंबर, ठीक है। जो हमें ओटीपी हम जो भेज रहे हैं वो होगा स्ट्रिंग। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर लिख दिया ताकि सेम वो हो जाए, डाटा टाइप हो जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। डिलीट तो बस सिंपली डिलीट हो जाएगा, इसमें कोई बताना ही नहीं है। गेट गेट ऑल करने के लिए तो आपको दिस डॉट स्टोरेज, तो स्टोरेज प्रिंट हो जाएगा। चलो मैं आपको ये दिखा भी दूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया न्यू टेम्परेचर, ताकि ये मैंने न्यू इसलिए किया है ताकि जो इंस्टेंस क्रिएट हो, ठीक है ना, स्टोरेज का, वो एक ही इंस्टेंस हो। क्योंकि बार बार करने से क्या होगा, न्यू इंस्टेंस क्रिएट होगा तो उधर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा यहीं पे न्यू लिखे एक्सपोर्ट मारो। चलो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नहीं हुआ तो एक बार फिर से देख लेना, और उससे भी नहीं हुआ तो कमेंट करना, मैं जरूर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है हमें, फॉरगेट पासवर्ड टेम्पलेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट को ले रहे हैं। अब टेम्पलेट हमारे पास कहाँ पे, ये रहा हमारा एचटीएमएल टेम्पलेट जो मैंने अभी दिखाया था ईमेल पे। चलो दिखा देता हूँ, ये हमारा टेम्पलेट है बेसिक सा। अभी जो नया कोड है वो भी देख लेते हैं। बस ये है हमारा टेम्पलेट, आप जैसे भी चाहो कस्टमाइज कर सकते हो, मैंने पहले ये दिखा चुका हूँ। और नोट मिलर सीरीज में मैंने बताया है कैसे आपको करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम रिप्लेस कर दो। मैंने यहाँ पे ईमेल कर दिया, आप नेम की जगह नेम डाल दो, आपको डाटाबेस में मिल जाएगा। ओटीपी डाल दो, ठीक है। तो मैंने फिर यहाँ पे क्या किया है, न्यू मेल क्लास से एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ मेल का। उस पर मेल सेट कर रहा हूँ, किसे भेजना है ईमेल। सब्जेक्ट क्या डाला हुआ है मैंने, पासवर्ड रीसेट, ओके। देन आफ्टर HTML सेट कर देना है आपको, वो फॉरगेट पासवर्ड वाला। तो देखो अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो मेल था उसमें मैंने क्या लगवाया था, प्रोमिस। तो प्रोमिस लगाने का फायदा क्या हुआ, ये वेट करेगा, ठीक है। पहले सेंड करने को वेट करेगा, तो जो रिजल्ट आएगा, देन क्या हुआ, रिजल्ट आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसके उसके अकॉर्डिंग अगर वो रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है, तो मैं वेरीफाई ओटीपी में उसको भेज रहा हूँ, रेंडर कर रहा हूँ पेज, और वहाँ पे ईमेल भी ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये ई जी एस है। तो आई थिंक आपको अगर पता है तो मैं दिखाई देता हूँ ओटीपी, ओके, ठीक है। तो ये ई जी एस है। यहाँ पे हमने क्या हुआ, टाइप ऑफ अनडिफाइंड, तो मैंने यहाँ पे एरर हैंडल करने के लिए अगर रॉन्ग ओटीपी डाला है तो वो भी दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद और क्या हो रहा है, ठीक है, ये तो टेक्स्ट है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कैच कर रहा है, अगर एरर आया तो इंटरनल सर्वर ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनवैलिड ईमेल, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ जाएगा इसके अलावा, अगर हमने वो ईमेल डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमने क्या बोलना है, 400, डेट मीन्स नो डाटा फाउंड और इनवैलिड ईमेल ऐसा कुछ, ठीक है। और ये मैंने, चलो इससे चालू कर देते हैं तो हमें पता रहेगा हमारे जो टेम्प स्टोरेज है उसमें क्या क्या है, ओटीपी स्टोरेज में हमारा क्या क्या है, ठीक है। फिर वेरीफाई कैसे करना है वो भी बताता हूँ। चलो पहले बैक लेते हैं, और फिर से एक बार बैक लेते हैं, फिर से ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं। चलो भेज चुके हैं, ओके। यहाँ जब आएगा तब देखते हैं। तो पोस्ट में क्या हो रहा है, ओटीपी वेरीफाई में, अच्छा चलो वेरीफाई होगा तो बताता हूँ। देखो अभी नया ईमेल आ चुका है, इस पर ओपन करते हैं। इसे कॉपी किया हमने और जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्लिक करते हैं वेरीफाई, इनवैलिड ओटीपी, ठीक है। अभी ये सब क्यों हो रहा है, चलो देखते हैं। मैप में हमारा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिस्टार्ट कर दिया गलती से। तो काम करते हैं, बैक लेते हैं, थोड़ा सा और लेते हैं। एक बार लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करके लॉग आउट कर लेंगे, एक बार रिलोड हो जाए भाई, ठीक है। अभी लॉगिन हो गया, लॉग आउट करते हैं।
फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किए। ठीक है, अभी तो लोड हो रहा है, ये वेट हो रहा है प्रॉमिस के, प्रॉमिस लगाने का यही फायदा है भाई। चलो न्यू ओटीपी आ चुका है हमारा, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, अभी वेरीफाई नहीं करेंगे, अभी चलते हैं इधर, देखो अभी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यूजर फाउंड हुआ लेकिन मैप में हमारे कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलो देखते हैं पहले एक बार वेरीफाई पे इंटर करके। तो इनवैलिड ओटीपी बता रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमारी स्टोरेज में जो मैप में है वो जा नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो होना ऐसा चाहिए, जब वो पोस्ट हो तो इस पे जाए बॉडी पे, बट जब हम लोग सेंड कर रहे हैं तभी तो हमें स्टोर करना चाहिए। तो इस सेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस सेट नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, इसे क्लोज करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ कुछ चेंज किया क्या। ओके 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 ओके, तो गलती यहाँ पे हो गई, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1000 × 5, यानी 5 सेकंड तक ही रहेगा, तो गलती यहीं पे हो गई, ठीक है। तो ये 5 सेकंड तक रहेगा, लेकिन हमें रखना कितना है, 5 मिनट तक। तो गलती हमारी तो हो गई है, अरे रे, ये हो गया 1 सेकंड, 1 जीरो और लगा देंगे तो, हाँ एक मीन, ठीक है यार, 60 करना चाहिए मेरे को, गलती मेरा कैलकुलेशन को क्या हो गया है। तो ये हो गया 60, यानी 1 मिनट × 5, ठीक है, अब ठीक है, एक नंबर है, ठीक है। अब ये 5 मिनट तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो छोटी सी गलती क्या क्या कर सकती, तो इससे पता चला हमारा जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। इनवैलिड ओटीपी बता रहा है यार, अगर ओटीपी ही नहीं है तो इनवैलिड ओटीपी भी बताएगा। तो चलो, क्योंकि अभी है ही नहीं, तो चलो देखते हैं, सेंड ओटीपी करके ईमेल डालना पड़ेगा। ओके, तो हमें ईमेल आ चुका है, चलो देखते हैं। तो ये आ गया, अब इधर पेस्ट करके देखते हैं क्या अभी भी एरर आ रहा है कुछ। ये क्या खुल गया, चलो ठीक है, अब देखो हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया और ओटीपी भी मैच कर रहा है, ठीक है। अगर हमें डाटाबेस को देखो, देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका, ईमेल ये है, और उसके अकॉर्डिंग उसका जो वैल्यू क्या है, ये ओटीपी है, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ओटीपी स्टोरेज पे जाएगा, वो वेरीफाई मेथड जो मैंने दिखाया था उस पर क्या है, ईमेल और ओटीपी डाल रहा है, वो वेरीफाई कर रहा है, अगर वेरीफाई हो गया तो कंसोल करेगा वेरीफाइड, देखो यहाँ पे कंसोल हो गया है, वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। कुकीज़ को वो दोबारा सेट कर देगा, इज लॉग इन को ट्रू कर देगा और रीडायरेक्ट कर देगा होम पे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोगों ने देखा इनवैलिड ओटीपी बता रहा है, और साथ में एरर भी दे रहा था ऊपर में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ऊपर भी एरर आ गया था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ यार लाइक करो, तो प्लीज़ 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 भाई, प्लीज़ यार लाइक करो, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मोटिवेशन थोड़ा सा तो दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉरगेट पासवर्ड कैसे सेटअप होता है, बेसिकली ओटीपी कैसे सेंड किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, साइन अप पे हम लोग ईमेल को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ईमेल बेसिकली उस यूजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ क्या करने वाले हैं। पहले हम लोग क्या करें, साइन अप पे क्लिक किया मैंने, फिर हमने नाम डाला, मेरा अपना नाम डाल देता हूँ और ईमेल और पासवर्ड डाल दिया, फिर मैंने क्लिक किया साइन अप पे। सो ये देखो ये लोड कर रहा है ऊपर, एंड या स्टार्ट लोडिंग, एंड यह लिखा हुआ है प्लीज वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, अपने ईमेल पे जाएंगे, एंड इफ यू सी वी रिसीव वेरिफिकेशन ईमेल। ओके, तो हमें क्या करना है, इस ईमेल इस लिंक पे क्लिक करके उस जिस ईमेल से हमने रजिस्टर किया है उसे मैं वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैं चलो क्लिक करता हूँ। एज सुन एज वी क्लिक ऑन दी लिंक वी हैव लॉग्ड इन, एंड अब अगर मैं इस स्टेप में आके देखो तो यहाँ यहाँ भी मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही सिखाने वाला हूँ, ठीक है। बट उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार, क्योंकि देखो अभी मैं दिखाने वाला हूँ कुछ। यार देखो, इस पूरी प्लेलिस्ट में, नोट मेलर की प्लेलिस्ट, बाय द वे अगर आप लोगों ने शुरू से वीडियो नहीं देखा है नोट मेलर की, ठीक है, प्लेलिस्ट की, तो पूरे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आपको स्टार्टिंग से सीखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाएगा अगर आप लोग को आता भी है तो। बट अभी देखो यहाँ पे व्यू भी ठीक ठाक ही आ रही है, बट देखो लाइक कितने कम है, ठीक है ना, किसी किसी में तो लाइक ही नहीं है। तो प्लीज़ यार लाइक क्या करो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, एंड या डू सब्सक्राइब ऑल्सो। अगर कोई दोस्त है आपका जो कि सीखना चाहता है यार कोडिंग या फिर ये नोट मेलर, तो उसे शेयर करो जरूर। एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वहाँ पे आंसर भी करूँगा, ठीक है। एंड या सो लेट्स सी हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस
साइन अप थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे। तो लास्ट टाइम जो मैंने कोड यूज़ करा था वही कोड सेम ही है। अगर आप लोगों के पास ये कोड नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग की कोड देख सकते हो। बट आई रिकमेंड कि आप लोग पहले खुद से ही करो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ही कोड देखो, क्योंकि खुद से करोगे तो प्रैक्टिस होगा, ठीक है, और समझ में आता है खुद से। सो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइनअप का राउट बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो साइनअप पेज रेंडर करेगा। तो मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया है, मैं यहाँ पे EAGS यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने व्यूज़ में अपना सारा HTML का पेज बना के रखा है। तो बेसिकली वही पेज है, ये वाला पेज है, सॉरी एक सेकंड, ये वाला पेज है साइनअप पे, ठीक है। तो जब वो साइनअप पे गेट करेगा तो ये पेज मुझे ये Node.js रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड जब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा साइनअप पे, तो ये पोस्ट मारेगा। पोस्ट में मुझे क्या मिलेगा, बॉडी से बेसिकली ये फॉर्म है, और फॉर्म से मुझे बॉडी में क्या मिलेगा, ईमेल, पासवर्ड और नेम, ये तीन चीज़ मिलेगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं डीबी मोंगोडीबी या कोई भी और प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर रहा हूँ डाटाबेस के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक खाली एरे बनाया हुआ है, ठीक है ना, डीबी के नाम से, डाटाबेस का जो काम करेगा। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल, पासवर्ड और नेम एंड इज वेरीफाइड को फॉल्स करके डाल देता हूँ, ठीक है, इसमें। उसके बाद मैं कर रहा हूँ जनरेट टोकन, एक टोकन जनरेट कर रहा हूँ। और टोकन जनरेट करने में क्या होगा, देखो मैं दिखाता हूँ टोकन जनरेट कैसे किया जाता है, ठीक। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जेसन वेब टोकन, ठीक है, JWT, आप सर्च कर सकते हो, अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज़ है। तो आप जाके पढ़ो, इसमें बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जनरेट एक्सेस टोकन। तो मैं जनरेट एक्सेस टोकन में अपना पेलोड डालूंगा, जिसमें बेसिकली ये ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। सो यहाँ पे एनी शो कर रहा है, क्योंकि ये जेएस है। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट शो करो यूज करोगे तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बट इससे कोई लेना देना नहीं है, अपना इधर देखते हैं। तो यहाँ पे टोकन कैसे जनरेट हो रहा है, JW2.sign, ठीक है, ये मेथड है बेसिकली। पेलोड डालेंगे, जो भी आपका ईमेल या पासवर्ड जो भी डालना है आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपका एक सीक्रेट कोड लेगा, तो मैंने यहाँ पे सीक्रेट कोड डाल दिया, आई एम हेलो आई एम आ सीक्रेट। आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट रिमेंबर जब आप प्रोटेक्शन में जाओ, आप बहुत ही एक क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव सीक्रेट रखो। कुछ भी क्या बोल सकते हैं, थोड़ा इधर उधर का, जो किसी को समझ नहीं आए, आई मीन कोई गैस भी नहीं कर पाए, ऐसा रखना, ठीक है। उसके बाद मैं एल्गोरिदम HS256 यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये काफ़ी ठीक है, तो ये यूज़ कर रहा हूँ। और एक्सपायरिंग टाइम जो कर रहा हूँ मैं 5 मिनट रख रहा हूँ। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, 5 मिनट, 5 डे, कुछ भी, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ ये जो लिंक है 5 मिनट में एक्सपायर हो जाए, ठीक है, 5 मिनट में। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट URL सेट कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने एक क्लास बनाया हुआ है शॉर्ट URL करके, जो कि मुझे एक ID रिटर्न करेगा और इस टोकन को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अगर आप लोगों को लास्ट टाइम याद है, मैंने एक OTP स्टोरेज करके एक बनाया हुआ था क्लास, ठीक है, जो कि इसी तरह का कुछ काम कर रहा था, OTP स्टोर कर रहा था और ईमेल स्टोर कर रहा था, इस टाइप का, ठीक है। बट वही है, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है तो, ठीक है, सेम ही है उसी टाइप का। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट स्ट्रिंग ले रहा हूँ, जो कि मुझे यहाँ पे जनरेट होगा। सो आप लोग कुछ अदर फंक्शन भी यूज सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे क्रिप्टो यूज किया हुआ है, नोट पैकेज है एक, ठीक है। उससे मैं एक स्ट्रिंग जनरेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लेंथ डालो तो उस लेंथ का आपको स्ट्रिंग जनरेट करके ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस उतार लो, ठीक है, अगर आप बना रहे हो तो। इस पर कुछ वो लेने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर देखो, मैंने क्या किया हुआ है, ID एक जनरेट किया 12 डिजिट का, ठीक है। 12 लेंथ बोल सकते हो करेक्टर का, क्योंकि यहाँ पे डिजिट और करेक्टर दोनों ही जनरेट होंगे, तो मैं करेक्टर बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो 12 करेक्टर पे जनरेट होगा स्ट्रिंग एक, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग पे मैं टोकन सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, सेट शॉर्ट स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग मैंने डाला है, और टोकन। तो मैंने सेट किया और गेट कर दूंगा, बस शॉर्ट स्ट्रिंग डाल के वो रिटर्न कर देगा, अगर उसमें होगा तो। बेसिकली अभी तो होगा, क्योंकि मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं डिलीट भी कर रहा था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो आई रिकमेंड आप लोग को देखो, OTP जनरेट वाला, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखो शॉर्ट URL इक्वल टू न्यू शॉर्ट URL, ये मैंने क्यों किया है, देखो मुझे चाहिए एक ही इंस्टेंस, ठीक है, ये जो क्लास है उसका एक ही इंस्टेंस है। अगर मैं बार बार क्रिएट करूंगा इंस्टेंस, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, मुझे मिलेगी नहीं वो स्ट्रिंग, किस इंस्टेंस पे रखी हुई है वो नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या किया हुआ है, एक इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है शॉर्ट URL का, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये ID मुझे रिटर्न कर देगा जहाँ पे मैंने जनरेट किया है। यहाँ से मैं जनरेट कर रहा हूँ तो इधर मुझे ID मिल जाएगी। फिर मैं मेल सेंड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने मेल क्लास यूज किया हुआ है। तो मैंने लास्ट की बहुत सारे वीडियो में मैंने मेल क्लास दिखा दिया अपना, कैसे मैं मेल भेज रहा हूँ। तो आई होप अगर आप लोग शुरू से फॉलो करो तो आपको अच्छे से पता होगा। बहुत ही अच्छा कोड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिकली क्लास बनाया हुआ था मेल का। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, आई रिकमेंड प्लीज़ देखो जाके। एंड प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो इधर जाओ। एंड मैंने सेट रिसीवर में ईमेल डाल दिया, जो ईमेल मिल रहा है मुझे साइनअप के लिए, ठीक है। एंड सब्जेक्ट ईमेल वेरिफिकेशन, और मैं यहाँ लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। अब लिंक देखो मेरा यहाँ पे क्या है, ए टैग में मैंने क्या है, HR पे रखा हुआ है। अभी मैं लोकली होस्ट पे हूँ, तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने डोमेन रखा हुआ है, डोमेन कुछ खरीद लिया है, तो आपको डोमेन डालना है यहाँ पे अपना, ठीक है। एंड या पोर्ट तो बेसिकली लोकल होस्ट के लिए। एंड जो भी आपका एंड पॉइंट है, जो कि वेरीफाई करेगा आपको इस ID को, या फिर ये टोकन जो है, आप डायरेक्ट टोकन भी डाल सकते हो। लेकिन टोकन मैंने इसलिए नहीं डाला, एक तो वो बहुत ज़्यादा ही लेंथ होता है उसका।
बहुत ज़्यादा ही लेंथ हो जाएगा, और ऊपर से वो जो होता है डिक्रिप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप यूजर आई मीन जो हैकर होगा, अगर मान लो हैकर है, तो वो देख सकता है आपका टोकन में क्या है। खैर उससे कुछ होगा नहीं, बट या मुझे छोटा करना था थोड़ा, तो मैंने बस ये मेथड अपना लिया, ठीक है। आप चाहे तो टोकन भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे। देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड मेल कर रहा हूँ। और वो जब मेल सेंड हो जाएगा, तो इधर मैं एक वेरीफाई करने का वो जो आपको दिखा था एक बार लोडिंग आ रहा था, देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है ना। अभी वो पेंडिंग में है, चलो ठीक है। अभी देखो ये जो लोड दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। ये जो मैंने एक एचटीएमएल लिख रखा है यहाँ पे, वेरीफाई ईमेल लोडिंग, ये देखो इसमें एचटीएमएल रखा हुआ है, वो लोडिंग वाला, ठीक है। तो वो शो कर रहा है। अगर कुछ एरर आता है मेल सेंड करने पे, तो स्टेटस ये दिखा देगा, एरर कंसोल कर देगा और स्टेटस 500 दिखा देगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं इधर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मेल मिलेगा मुझे, देखो अभी मैं जाता हूँ, यहाँ तो मुझे एक मेल आया हुआ है, तो उसको पे जाते हैं एंड इधर क्लिक करते हैं एंड या क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल। सो जैसे मैंने क्लिक किया वो वेरीफाई हो गया। अब देखो इधर यहाँ पे मैं होम पे आ जाऊंगा, ठीक है, वो आ गया मैं होम पे। तो यहाँ पे हुआ क्या, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो वेरीफाई स्लेस आईडी, तो आईडी मैंने प्रेम से गेट कर लिया। इज वेरीफाइड टोकन आईडी, तो मैंने क्या किया, टोकन आईडी पे मेथड पे अपना आईडी डाल दिया। ये जो फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है देखो। तो सबसे पहले टोकन कैसे मिलेगा मुझे, सॉर्ट यूआरएल डॉट गेट, तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया, तो इससे क्या किया, ये इधर गया और इधर से वो टोकन लेके आया, ठीक है। सो टोकन को डिकोड कैसे करते हैं, एक मैंने वेरिएबल बनाया डिकोड, उस पर JW2 डॉट वेरीफाई टोकन डाल दिया, और सीक्रेट भी डालना इंपॉर्टेंट था, और ये सीक्रेट सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना के रखा हुआ है सीक्रेट, ठीक है। बार बार अलग अलग नहीं डालना है अपने को, एक ही रहना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग कुछ रखना चाहिए। तो वो मिलेगा मेरे को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने को रिटर्न करना है। अगर ये मिल जाएगा तो स्टेटस ट्रू होगा, और पेलोड मिलेगा मेरे को, ठीक है ना, ठीक है। और पेलोड में क्या होगा, जो जो मैंने डाटा डाला हुआ है, जो डाटा डाला हुआ है वही मुझे इधर रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू या फॉल्स होगा, अगर ट्रू है स्टेटस मैंने देखूंगा यहाँ पे, अगर ट्रू है तो मैप में मैं उस यूजर को फाइंड करके वहाँ पे इज वेरीफाइड करके ट्रू मार दूंगा, और यूजर यानी आर क्यू जो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी है जो है, उस पर एक यूजर ऐड कर दूंगा, जिसके वैल्यू ये सब कंटेन करेगा, ईमेल नेम, ठीक है। एंड यूजर को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न किधर होगा, वो इसी पर आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैप है वो इधर ही रह जाएगा। उसके बाद इफ के नीचे आएगा तो तुझे मिलेगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा, तो देखो अभी ये जो है ना, सेट यूजर सेशन, ऊपर आ जाओ। यहाँ पे क्या करेगा वो जो मैंने इस पे एक ऑब्जेक्ट डाला हुआ था आरडी पे, उससे मुझे ईमेल और नेम मिला, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये आरडी ऐसे इस पे जो रिजल्ट मैं भेजूंगा, ठीक है ना, तो उस पर कुकीज मैंने सेट किया, इज लॉग इन ट्रू, और ईमेल और नेम सेट किया, फिर मैंने नेक्स्ट किया। ये बेसिकली एक मिडिल वेयर है, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये है, तो आर इज डॉट रीडैग, रीडैग कहाँ होगा, स्लेस पे, स्लेस क्या है हमारा, होम पेज है, बेसिकली इंडेक्स है। तो हमारा इंडेक्स पेज ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखो और क्या हो सकता है इधर, सॉरी, या या तो मैं यहाँ पे 5 मिनट रखा हुआ था, ठीक है ना, मैं अभी क्या करता हूँ 10 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। 10s, अब 10 सेकंड के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा लॉग आउट करता हूँ और दोबारा से रजिस्टर करता हूँ। अब मैं बार बार रजिस्टर क्यों कर पा रहा हूँ, आई मीन साइन अप क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ यहाँ पे वैलिडिटी वैलिड नहीं कर रहा हूँ कि वो ईमेल का बंदा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे डाटाबेस में या नहीं। तो अगर अब लोग डाटाबेस यूज कर रहे हैं मोंगोडीबी ये सब, तो उसको आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। चलिए दोबारा करते हैं। अभी देखना ये 10 सेकंड में एक्सपायर हो जाएगा। चलो अभी भेज रहा है, सो अभी आ चुका है। तो 10 सेकंड वेट करते हैं, ठीक है। इन 10 सेकंड में अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ 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 यार कर दो। एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार, नई नई वीडियो आती रहती है, एंड ऑन डिमांड वीडियो आती है, जो भी आप कहोगे उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। ये भी किसी बंदे ने मुझे बोला था इस पर वीडियो बनानी, इसलिए मैंने बना रहा हूँ। तो अभी 10 सेकंड हो चुकी होगी, तो मैं इधर क्लिक करके देखता हूँ। देखो अभी उस पर नहीं किया, आई मीन होम पेज पे नहीं किया, ये लॉगिन पे डाल दिया, ठीक है। ये ऐसा होगा क्योंकि उधर उसे फॉल्स मिल गया, आई मीन यहाँ देखो, इधर जब वो आएगा यहाँ पे वेरीफाई करने, ठीक है, तो यहाँ पे उससे वो टोकन मिलेगा ही नहीं, उधर दिखेगा उसको फॉल्स है, तो वो स्टेटस फॉल्स कर देगा। एंड फॉल्स करने पे क्या होगा, इधर इधर आएगा वेरीफाई पे, इधर मिलेगा उसको फॉल्स, तो हो जाएगा इस पे, इस क्या कर रहा है वो लॉगिन पे भेज रहा है। अब जहाँ चाहो वो भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड ये लास्ट रिमाइंडर यार, प्लीज़ लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड कमेंट जरूर करो यार, क्योंकि कमेंट भी यार इंपॉर्टेंट करती है, मैटर करती है बहुत ज़्यादा, आपको कैसा वीडियो लग रहा है। एंड या कमेंट भी करना, आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। आई या अपलोड मैं आज ही कर दूंगा, ठीक है। सो बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।